Jai Jagannath and welcome back to my YouTube channel Rover Hytel. First of all, thank you to all for making me reach the achievement of 1000 subscribers. So again, I'm starting my journey after the 1000 subscribers from Rayagada. This is the part 2 video. I hope you have all watched the part 1. If not, I will provide the link in the description. So this place has a lot of things to offer. Like in every 5 to 10 kilometers, you will be getting a picnic spot over here. And there are a lot of places over here to visit. I don't know how many places I can cover up. Let's see what's ahead. Don't forget to watch till the end to enjoy the vlog and to enjoy the beauty of Rayagada. So let's explore. Now we are at Therubali, a place that is 25 kilometers from Rayagada. We are going to the Paikapada Pataleswar Shiva temple, which dates of 9th century. It is believed that there are 99,99,999 Shivalingas around here. Lord Jagannath and Ma Dakshineshwar Kali and Chamunda are also the common deities that are worshipped here. The major festival that is held here is Sivaratri and Rath Yatra. तो अभी हम लोग लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि थेरुवली में है वो जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे चाटिकोना और बिसम कटक की ओर। So now we have reached Bissam Cuttack. This is Ma Markama temple and this is the only shrine of Ma Markama in Indian state of Odisha, and her sister Ma Karkama's temple also situated adjacent to her. The people of Bissam Cuttack believe her a lot, and Dashera and Chaitra are the main festival that is held here in this temple. And even my schooling is here in Bissam Cuttack. So before going to any of the meet outside, we usually come here and worship Ma before going there. तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं इस जगह को चाटिकोना बोलते हैं। ये बिसम कटक से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे है टुवर्ड्स रायगढ़। और ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये यहाँ का फेमस शिव मंदिर है, और ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से एक वाटरफॉल आके इस मंदिर के ठीक साइड पे गिरता है। तो हम लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ से एक राइट टर्न लेंगे और हम लोग जाएंगे साइड के पहाड़ों के घाट के ऊपर। ये जो साइड के पहाड़ हैं ये नियमगिरी हिल रेंज है। अगर आपको पता नहीं नियमगिरी हिल रेंज क्या है तो आप लोग वेदांता कंपनी और नियमगिरी हिल रेंज की डिस्प्यूट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हिल रेंज है ये पूरी की पूरी बॉक्साइट से भरी हुई है, लेकिन इसमें माइनिंग की परमिशन
टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो हिल रेंज है ना, ये नियमगिरी, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और ये उनकी जीवनी पूरा इस पहाड़ी पे डिपेंड करती है। लाइक वो लोग यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं और उनसे जो मिलता है उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ मिलता है वो है पाइनएप्पल। यहाँ ऊपर में आप बारिश के दिनों में आएंगे, जो रेनी सीजन होता है, तो आपको एक पाइनएप्पल सिर्फ 5 रुपए में मिलता है। आप बिलीव कर सकते हैं, मार्केट में जाइए आपको वहाँ पे 30-40 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आइए आपको पाइनएप्पल सिर्फ 5 रुपीज़ में मिलेगा और वो सीधा आपको पेड़ से काट के देंगे। बहुत मस्त रहता है जब बारिश के सीज़न में हम लोग आते हैं। अभी तो छोड़ो, विंटर सीज़न आ चुका है तो मुझे नहीं लगता अभी प्लांटेशन चालू होगा पाइनएप्पल का, लेकिन हम लोग ये घाट ज़रूर एंजॉय करेंगे और यहाँ पे बहुत मस्त व्यूज़ है, वो देख के हम लोग नीचे आएंगे टेम्पल पे। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार आया तो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। एडियोस एमिगोस।